Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we will be reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 1, the advent of Lord Krishna, an introduction. Text 21, translation purport by His Divine Grace, Asa Bhakti-yoga Swami Prabhupada. हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का परिचय श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद ने। गिरं समाधौ गगने समीरिताम् गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदास्त्रिदशान् उवाच निशम्य वेदास्त्रिदशान् उवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनः गां पौरुषीं मे शृणुतामराः विधीयताम् आशु तथैव मां शिरम् गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदास्त्रिदशान् उवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनः विधीयताम् आशु तथैव मा चिरम् गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदास्त्रिदशान् उवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनः विधीयताम् आशु तथैव मा चिरम् Giram, a vibration of words. You just repeat the Hindi. शब्दों की ध्वनि समाधौ Wait, I'm going to do it, but they just repeat the Hindi. Okay? Samadho, in trance. समाधि में Gagane, in the sky. आकाश में Samiritam, vibrated. ध्वनि Nishamya, hearing. सुनकर Veda, Lord Brahmā. ब्रह्मा ने Tridashan, unto the demigod. देवताओं को Uvacha, said. कहा Ha, ho, हो gam, the order. आदेश Paurushim, received from the Supreme Person. परम पुरुष से प्राप्त Me, from me. मुझको Shrinuta, just here. सुनिए Amara, O demigod. हे देवताओं Punaha, again. फिर Vidiyatam, execute. संपन्न करो Ashu, immediately. तुरंत Tatha eva, just so. उसी तरह Ma, do not. मत
Chiram, delay. विलंब. Translation. While in trance, Lord Brahma heard the words of Lord Viṣṇu vibrating in the sky. Thus he told the demigods, O demigods, hear from me the order of Kshirodakashayi Viṣṇu, the Supreme Person, and execute it attentively, without delay. ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना, तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष शिरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो. Purport. It appears that the words of the Supreme Personality of Godhead can be heard in trance by competent persons. ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं. Modern science gives us telephones by which one can hear sound vibrations from a distant place. आधुनिक विज्ञान ने हमें टेलीफोन प्रदान किया है, जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियां सुन सकते हैं. Similarly, although other persons cannot hear the words of Lord Viṣṇu, Lord Brahma is able to hear the Lord's words within himself. उसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु ब्रह्मा जी अपने अभ्यंतर में भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं. This is confirmed in the beginning of Srimad Bhagavatam. इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही हुई है. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Adi Kavi is Lord Brahma. तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी हैं. In the beginning of the creation, Lord Brahma received the instructions of Vedic knowledge from Lord Viṣṇu through the medium of the heart, Hridaya. ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के माध्यम से हृदय भगवान विष्णु से वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया. The same principle is confirmed herewith. यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है. While Brahma was in trance, he was able to hear the words of Kshirodakashayi Viṣṇu, and he carried the Lord's message to the demigods. ब्रह्मा ने समाधिस्थ अवस्था में शिरोदक्षाई विष्णु के शब्द सुने और भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुंचाया. Similarly, in the beginning, Brahma first received the Vedic knowledge from the Supreme Personality of Godhead through the core of the heart. इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के भीतर भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया. In both instances, the same process was used in transmitting the message to Lord Brahma. दोनों ही अवसरों पर ब्रह्मा जी तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रयुक्त हुई. In other words, although Lord Viṣṇu was invisible, even to Lord Brahma could hear Lord Viṣṇu's words through the heart. दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रहे थे, किंतु वे अपने हृदय के माध्यम से भगवान विष्णु के शब्द सुन सके. The Supreme Personality of Godhead is invisible even to Lord Brahma, yet he descends on this earth and becomes visible to people in general. परम पुरुष भगवान ब्रह्मा जी तक को नहीं दिखते, फिर भी वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं. This is certainly an act of his causeless mercy, but fools and non-devotees think that Krishna is an ordinary historical person. यह उनके अहेतु की कृपावशी होता है, किंतु मूर्ख तथा अभक्त यही सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं. Because they think that the Lord is an ordinary person like them, they are described as Mudha, Avajananti Mam Mudha. क्योंकि वे भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं, इसीलिए उन्हें मूढ़ कहा गया है. अवजानन्ति मां मूढ़ा. The causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead is neglected by such demoniac persons who cannot understand the instructions of Bhagavad Gita and who therefore misinterpret them. ऐसे असुरगण जो भगवद गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाते और जो इसीलिए इन उपदेशों की गलत व्याख्या करते हैं, वे भगवान की कृपा की अहेतु की कृपा की उपेक्षा करते हैं.
Mama Jnanatinirandasya Jnanandana-shalakaya Chakravritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano-Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kalamayam Dadati Swaparantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namostute Tapta Krishna Bhavani Radhe Vrindaveshwari Vishwanu Seve Bhagavani Vanchakalpatarusha Vipasindhu Vecha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Shivasa Gaura-bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay. So we all know the story, right, of what is described here. Everybody knows the background story, I think. Not to just say what I say. क्या सब जानते हैं कि ये पीछे का जो इसके इस कथा के जब इतने 7 श्लोक के पीछे की क्या भूमिका रही है? So you say they don't know. It's amazing. How is that possible? So I will ask now. What's happening here? Brahma is hearing Lord Vishnu's voice vibrating in the sky, and he goes to the demigods. What's the situation? Anybody knows? Or no? Who doesn't know? तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि भगवान विष्णु की ध्वनि है, आवाज है, उसको ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या प्रक्रिया हो रही है? कौन नहीं जानता है? वो हाथ खड़ा करे, हमारा जानना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन नहीं जानता? Oh, this is very bad. ये बहुत अच्छा नहीं है। You have no idea? आप लोगों को क्या इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? This is the first chapter of 10th canto called the Advent of Lord Krishna. तो ये दशम स्कंद का प्रथम अध्याय है जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार, परिचय, भगवान का अवतार। So you don't know what are the circumstances, how Krishna came. तो आप लोगों को ज्ञात है कि किन परिस्थितियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था? Anyway, we'll just summarize it very quickly. As it was stated in Bhagavatam, the earth was overburdened by the very heavy load of demoniac kshatriyas. तो हम संक्षेप के अंदर इस कथा का इस भूमिका को डिस्क्राइब करते हैं कि एक समय पृथ्वी जो है आसुरी क्षत्रियों के द्वारा बहुत ही भार पहुंची थी। So then the earth in the shape of a cow went to Brahma to say, please help. तो पृथ्वी देवी धरती माता एक गाय के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और रुदन करते हुए प्रार्थना करती हैं, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। And then earth, Bhumi, as a cow, Brahma and all the demigods went to the milk ocean. तो भूमि देवी जो गाय के रूप में थी और सभी देवतागण ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के जो है क्षीर सागर पे जाते हैं। And so we can actually just read from the Bhagavatam, so we don't speculate. Verse 19. Having heard the distress of Mother Earth, Lord Brahma with Mother Earth, Lord Shiva and the other demigods approached the shore of the ocean of milk. तो 19 श्लोक में बताया कि माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, पृथ्वी माता, शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। After reaching the shore of the ocean of milk, the demigods worshipped the Supreme Personality of Godhead, Lord Viṣṇu, the Master of the whole universe, the Supreme God of all gods, who provides for everyone and diminishes everyone's suffering. क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश्वर, हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। With great attention, they worship Lord Viṣṇu, who lies on the ocean of milk, by reciting the Vedic mantras known as the Purusha Sukta. उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। So now the response of the Lord is this verse. While in trance, Lord Brahma heard the words of Lord Viṣṇu vibrating in the sky.
तो जब सब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान का इसके पीछे भगवान की इसमें क्या प्रतिक्रिया हुई वह इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जो समाधि में थे तो भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते हुए उन्होंने सुना। And apparently nobody else was hearing this. और ऐसा लगता प्रतीत होता है कि अन्य कोई भी इस बात को नहीं सुन पा रहा था सिवाय ब्रह्मा जी के। Otherwise, why would he say it? He told the demigods, "Oh demigods, hear from me the order of Kshirodakashai Vishnu, the Supreme Person, and execute it attentively without delay." क्योंकि ये शब्द केवल ब्रह्मा जी नहीं सुने थे, श्रवण किए थे, इसलिए वे सभी देवताओं को कहते हैं कि अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष शिरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। So, as Srila Prabhupada explains, here somebody who is competent, he can in trance hear the words of the Lord. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम होता है तो वह समाधि में भगवान के वचन को सुन सकता है। Now in Bhagavad Gita, Krishna indicates what is the qualification. इन भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति की योग्यता बताते हैं जो भगवान की ध्वनि को, भगवान के शब्दों को सुन सकता है। Priti Purvakam, somebody who worships the Lord with priti, with love and devotion. तो भगवान की नाम तार तेषां सतत नाम भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करता है सब वह सक्षम बनता है भगवान के वचन को सुनने के लिए। That is the qualification, then you become competent. उस प्रकार से हम भगवान के आदेश को सुनने के लिए सक्षम बन सकते हैं प्रीति पूर्वक भजन के लिए। And then Krishna says, Dadami Buddhi Yoga, I will give the intelligence, I will enlighten them from within the heart. और कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई इस प्रकार से प्रीति पूर्वक सेवा करता है तो मैं हृदय के अंदर से हमें बुद्धि देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम था। So Brahma, he is able to hear the Lord's words within himself. तो ब्रह्मा जी जो है अपने हृदय के अंदर भगवान के वचनों को सुन पाते हैं। And I think we will read a little bit from the second canto, answering by citing the Lord's version, where Brahma, it is explained how Brahma heard from the Lord. तो हम दूसरे स्कंद में से कुछ पाठ करेंगे जहाँ पे ब्रह्मा जी जो है हृदय के अंदर भगवान की ध्वनि को सुनते हैं। It is described, and you probably, that I think you should know, that he is being born on the lotus flower that comes from Gauravani Vishnu. Everybody knows that. तो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय बताया है और भगवान ये ब्रह्मा जी जो है भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के। Yes. Somebody doesn't know this. इस विषय को नहीं जानते, ऐसे कोई है जो नहीं जानते कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से प्रकट होते हैं। Okay, good. Thank you. So then what happened when he appeared on the lotus? Do you know what happened? तो ब्रह्मा जी जब नाभि से प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? कोई जानता है इस विषय में? So, what happened? Maybe the vibration of Well, not immediately. What happened when he appeared there? he goes down and finds out the word. Why? He doesn't know. Exactly. He didn't know what's going on. Where am I? What is all this? जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि वे कौन है, कहाँ से, और उनका क्यों जन्म हुआ है, क्या अभिप्राय है। तो उसको जानने के लिए वे कमल की नाल के जो रूट है, जड़, जो उनका मूल है, उसको खोजने के लिए निकलते हैं। So he dives down through to the lotus stem to find out the source, the origin. तो अपने ओरिजिन को, अपने आदि मूल कारण को खोजने के लिए वे जो है उस कमल के नाल नीचे जाते हैं। And he was unable. It was not possible. He couldn't find. और वे उसको नहीं प्राप्त कर पाए, उस मूल को नहीं खोज पाए। So then he comes up again. अब फिर वो वापस ऊपर आते हैं। And he sees all darkness all around. और वो अपने आसपास केवल अंधकार प्राप्त करते हैं। And he begins to meditate. और वो जो है ध्यान लगाना शुरू करते हैं भगवान के ऊपर। And then he hears these words. और फिर वे इन वचनों को सुनते हैं, तप तप। Yes. So we read now from the 9th chapter, and there it is described. Let's see.
295. Lord Brahma, the first spiritual master supreme in the universe, could not trace out the source of his lotus seat. And while thinking of creating the material world, he could not understand the proper direction for such creative work, nor could he find out the process for such creation. तो प्रथम गुरु या ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने की कोई विधि ढूंढ पाए। While thus engaged in thinking, in the water, Brahmaji heard twice from nearby 2 syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets, that is Ta and Pa, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. इस प्रकार जब जल में से ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए 2 शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। So when he heard the sound, he tried to find the speaker, searching on all sides. But when he was unable to find anyone besides himself, he thought it wise to sit down on his lotus seat firmly and give his attention to execution of penance, tapa, as he was instructed. जब उन्होंने बात सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। So then Lord Brahma underwent penances for 1,000 years by the calculation of the demigods. He heard this transcendental vibration from the sky and he accepted it as divine. Thus he controlled his mind and senses, and the penances he executed were a great lesson for the living entities. Thus he is known as the greatest of all ascetics. ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और उसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। So then the next few verses describe how then Krishna actually reveals to Brahma the Vaikuntha world. अगले कुछ श्लोकों के अंदर बताया गया है किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ जगत का दर्शन कराते हैं। And we have the description in the Brahma Samhita. और वह जो विवरण है, वर्णन है, वह ब्रह्म संहिता के अंदर हम प्राप्त करते हैं। Chapter and Srila Prabhupada, generally when we speak about the prayers, it starts with text 1029, Chintamani Prakara Satmasura Riksha Lakshavriteshu Suravira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Shata Samdamanam Govindam Adi Purusham Tamam Vajami. So there he describes the spiritual world. तो हमारे पास ब्रह्म संहिता का जो 5वां अध्याय है वह उपलब्ध है, और श्रील प्रभुपाद जब भी ब्रह्म संहिता का कोट करते थे तो वो 29वें श्लोक से कोट करते थे, चिंतामणि प्रकर सद्मासु, जिसके अंदर वैकुंठ जगत का वर्णन किया गया है। And it looks like then he can see the Lord. Venum kvanantam aravindaraya daksham. He has a flute, he has a peacock feather, and he is so beautiful as more beautiful than millions of cupids. और तब हम देखते हैं कि ऐसे वैकुंठ जगत का वर्णन करने के बाद में वे भगवान का दर्शन कर पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है वेणु पुणंतम अरविंद दलायताक्षम, कि भगवान बांसुरी लिए हैं और जो है मोर पंख धारण किए हैं और करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। So all these next verses describe how Brahma saw the Vaikuntha planets. तो कई श्लोकों के अंदर बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत का दर्शन प्राप्त किया। So then let's continue. He presents himself before the Lord, and it says the Lord shook hands with Brahma. तो जो है बताया कि वे ब्रह्मा जी भगवान से नतमस्तक होते हैं और भगवान जो है ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं। So even that is possible. ये भी संभव है कि भगवान के साथ हाथ मिलाना, हैंडशेक करना।
Yes, handshake. So then, the beautiful personality of Godhead speaks to Lord Brahma. तो उसके बाद परम सुंदर भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को संबोधित किया। Text 20, he says, O Brahma, impregnated with the Vedas, I'm very much pleased with your long accumulated penance with the desire for creation. Hardly am I pleased with these pseudo-mystics. तो ब्रह्मा भगवान ने कहा, हे वेदों से संयुक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। I wish you good luck, O Brahma. You may ask from me, the giver of all benediction, all that you may desire. You may know that the ultimate benediction as the result of all penances is to see me by realization. तो भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। The highest perfectional ingenuity is the personal perception of my abodes, and this has been possible because of your submissive attitude in the performance of severe penance according to my order. सर्वोच्च सिद्धि में पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। O sinless Brahma, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance when you were perplexed in your duty. Such penance is my heart and soul, and therefore penance and I are non-different. हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसे तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। And then he says, I create this cosmos by such penance. I maintain it by the same energy, and I withdraw it all by the same energy. Therefore the potency is penance only. मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ, और इसी से इसको अपने आप में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। Yes, Shakti hai. Tapa Shakti hai. Yeah, you understand that, no? Strength comes from tapasya. तपस्या जो है वह शक्ति प्रदान करती है, बल देती है। And if you become a Vishayi, Shakti na, how you say? No, na? Nahi. Okay. It will be zero Shakti. जब व्यक्ति का विषय भोग में लिप्त होता है, विषय बन जाता है, तो वह शक्ति समाप्त हो जाती है। So Brahma, he is our founder acharya of the whole sampradaya. We know that. तो ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, प्रतिष्ठाता आचार्य हैं। And in this section of Bhagavatam, then he will instruct Narada Muni. और भागवतम के इस पर्टिकुलर विषय के अंदर बाद में ब्रह्मा जी नारद जी को जो है आदेश देंगे। Actually, it is said that the whole Srimad Bhagavatam, the Lord transmitted this knowledge to Brahma, then Brahma gave it to Narada, Narada gives it to Vyasadeva. तो ऐसा बताया है कि ये भागवतम का पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने आगे दिया श्री नारद जी को, और नारद जी ने व्यासदेव जी को। So here we have this example and the instruction how to be able to communicate with the Lord. तो यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है कि किस प्रकार भगवान के साथ संपर्क किया जा सकता है। In some religious tradition, people think they can just directly communicate with God. किन्हीं धार्मिक सिद्धांतों में या धर्ममतों के अंदर कई लोग सोचते हैं कि हम भगवान से सीधा बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। I'm not sure whether you know, I just want to say it, tell you in general knowledge. In the original Catholic tradition, there are many saints and like spiritual masters, who are helping us to come near to God. तो जो कैथोलिक चर्च है, गिरजाघर हैं, उनके अंदर कई
एक प्रकार से संत रहते थे या गुरुजन रहते थे जो लोगों को आदेश दिया करते थे, भगवान के विषय में संदेश दिया करते थे। Now, because it became kind of degraded over time, then there was a split in the church. तो समय के साथ में उसमें कुछ कमी आई, तो उनके अंदर जो है विच्छेद हो गया, उस चर्च के अंदर दो विभाजन हो गए। There was a protest. और फिर एक आंदोलन होने लगा। And therefore they are called Protestants. और इसीलिए दूसरा जो भाग था, एक बने कैथोलिक्स और एक बने I was raised as a protesting. प्रोटेस्टेंट। और महाराज कह रहे मेरा भी जो लालन पालन हुआ था उसी प्रकार के वातावरण में हुआ था। I remember when I was young, you know, we really, there was a difference between who was a Catholic and who was a Protestant. अब हाल में जब मैं युवा था तो हमने देखा था कि इसमें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर जो है भेद था। We were looking down on the Catholics. और महाराज कह रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स हैं वे जो कैथोलिक्स को नीचे देखा करते थे, नीचे दृष्टि से। With all these churches, all these ornamentation and saints and stuff, it's ridiculous. तो उनके अच्छे चर्च या संतों को देखकर भी हम बोलते थे कि नहीं ये सब तो दकियानूसी है। If you go to the Protestant church, there's nothing. अगर प्रोटेस्टेंट चर्च में जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होता, ना बहुत सुंदर चर्च है, ना कोई ज्यादा संत है। There will be a cross. वहाँ पे केवल एक क्रॉस रहेगा। But no Jesus on the cross, of course. और उस क्रॉस पे जीसस भी नहीं रहेंगे, ईसा मसीह नहीं रहेंगे। And an altar, just very plain, no decoration, nothing, zero. और ऑल्टर जो उनका ऑल्टर है गर्भगृह, वहाँ पे भी किसी प्रकार की कोई सजावट नहीं, कोई भी मतलब zero. Shunyavadi. It's really Shunyavadi philosophy. तो उनका सिद्धांत में शून्यवाद फिलॉसफी है। So, and the idea is, how do we can approach them just by prayer? और उनका विचार यह है कि केवल प्रार्थना करके हम भगवान से अपना संबंध बना सकते हैं। And you don't pray like this. This is Catholic type of praying. You pray like this. तो कैथोलिक जो है इसमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स क्या है, दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ करते हैं प्रार्थना। Everything different. Don't do anything like they were doing. और उनका है कि जो चीज वो कैथोलिक्स करते हैं उनसे बिल्कुल हर चीज हमने हटके करनी है। But of course, unless you have become competent, as Srila Prabhupada said, how can you communicate with the Lord by prayer? It's not possible. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल आप प्रार्थना इस प्रकार से प्रार्थना करने से आप भगवान की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए हमको सक्षम बनना पड़ेगा। Yes. So generally, of course, the tradition is we take help from the Lord's devotees who are competent. हमारी जो परंपरा है वह यह है कि हम भगवान के भक्तों की सहायता लेते हैं जो निश्चित रूप से सक्षम हैं। Yes, yasya prasada bhagavan prasada. If we can obtain the mercy of a dear devotee of the Lord, then it's easy to obtain the mercy of the Lord. यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। हमारा सिद्धांत है कि यदि हम किसी भगवान के भक्त की कृपा ग्रहण करते हैं जो सक्षम है भगवान के संदेश सुनने में, तो हमें भी सहायता प्राप्त होती है। At the same time, however, it's not just that we are lazy and we're just depending on some special mercy and we'll not do anything to deserve it. इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब आलसी हैं और भगवान की कृपा पे ही केवल आश्रित रहते हैं और अपनी तरफ से कोई परिश्रम या श्रम नहीं करते हैं। No, we are supposed to follow the footsteps. हमें जो है पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। And also, of course, yes, the footsteps of Brahmā. अब ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का भी निश्चित रूप से हमें अनुसरण करना चाहिए। And learn from the Lord's instructions to him how important actually this penance or tapasya is. और हमें सीखना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है यह तपस्या करना। ब्रह्मा जी के चरित्र से हमको सीखना चाहिए। Now we cannot imitate, of course. We cannot just meditate for 1,000 celestial years. निश्चित रूप से हम 1000 देवी वर्षों में तपस्या तो नहीं कर सकते। So then tapasya is adjusted according to the time and the people and the circumstances. तो तपस्या को देश और काल और पात्र के अनुसार जो है उसके उस समय के अनुसार में जो है बताया जाता है। But as the Lord said in one of those verses, He is hardly ever pleased by these pseudo mystics. और इन्हीं में से श्लोक में बताया था कि भगवान बहुत ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो मतलब असंभव रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं छद्म योगियों से या ढोंगी जो लोग हैं। Yes.
because they may also perform tapasya. क्योंकि ऐसे योगी या छद्म योगी भी हो सकते तपस्या करते हो। But as we find in Bhagavad Gita, there's three, according to the modes of nature, there are different types of tapasya. तो भगवद गीता के अंदर देखते हैं कि अलग अलग गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार की तपस्याएं होती हैं। Generally, the definition of tapasya Prabhupada gives is to voluntarily accept some inconvenience. श्रील प्रभुपाद जी जो है तपस्या की एक जनरल परिभाषा देते हैं कि स्वेच्छा से कुछ कष्ट स्वीकार करना, Or he even says a little more stronger, voluntarily accepting suffering. और प्रभुपाद जी कभी कभी लिखते हैं कि स्वेच्छा से कष्ट अनुभव करना, तकलीफों को सहन करना। But then one may think, why should I accept suffering? Nobody wants to suffer. तो कोई ये सोच सकता है कि भाई मुझे क्यों तकलीफ ग्रहण करनी चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं चाहता वैसे जीवन में। But if you think about it, hardly anything you can obtain in this world without some inconvenience or suffering. लेकिन हम थोड़े से खुले दृष्टिकोण से भी देखें तो हम देखेंगे कि जीवन के अंदर हमें बिना तकलीफ सहन किए कुछ भी चीज प्राप्त नहीं होती है। I think it's definitely more visible in India than in other places. और भारत में तो विशेषकर आप देख सकते हैं कि बिना तकलीफ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। How under very difficult circumstances people just work like an ass, as Prabhupada says. और Just for a little bit of money. थोड़े से पैसे के लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं गधे की तरह लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। But basically everywhere else is basically the same situation. और सब जगह वैसे पूरे विश्व में वो पुण्य से किस बात तो एक ही इसी प्रकार से है। Yes. Sometimes, or some of us may think, oh, it's a very great tapasya to get up early before 4 o'clock. हम में से कुछ लोगों को लग सकता है कि 4 बजे से पहले उठना बहुत बड़ी तपस्या है। You don't know how many people get even up earlier just to work like an ass. तो लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितने सारे लोग हैं जो कि इससे भी कई जल्दी उठ जाते हैं गधे की तरह कार्य करने के लिए। They do it also. You can say voluntarily, but forced by circumstances. They don't have any other type of work, so it's the work nobody wants to do. Get up very early at night and go and get the garbage, for example. तो इसको हम ये तो एक तरीके से देखा जाए तो स्वेच्छा तो नहीं है, उनको परिस्थितियों ने विवश किया इस प्रकार कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि उस प्रकार कार्य उनको मिला है, क्योंकि और नहीं करता या नहीं कर सकता या उन्हीं को करना पड़ रहा है, तो इतनी जल्दी उठ के उन्हें मान लीजिए कूड़ा चुगना पड़ रहा है या अन्य, इसके लिए बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ जाता है। Well, that's generally how the garbage department works in the West. और कम से कम पाश्चात्य देशों के अंदर तो जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो उसी प्रकार रात में या बहुत सुबह कार्य करते हैं। Yes, if you're living in the city, then you may become disturbed because at 2 o'clock in the morning somebody will go with a truck and dumping the garbage. वेस्ट के पाश्चात्य देशों के अंदर रात के 2 बजे जो है आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है जब देखेंगे ऐसे कूड़ा इकट्ठा करने वाले ट्रक या व्हीकल वाहन आए हुए हैं। So you have to वैसे आवाजें करते हैं जैसे महाराज। So you have to work at 2 o'clock in the morning. Well, getting up at 4 is like, it's like vacation. तो ऐसे लोगों को 2 बजे उठना पड़ता है या उससे भी जल्दी, तो 4 बजे उठना तो अवकाश है एक प्रकार का। So tapasya, practically the living entity in the material world, the conditioned soul cannot avoid. तो तपस्या को तो बद्ध जीव भौतिक जगत में उससे बच नहीं सकता है। But it shouldn't be materially contaminated, rajasic or tamasic tapasya. लेकिन वह जो है भौतिक कल्मश से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वह तपस्या रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, वो अच्छा तपस्या है। We should follow the instructions given by Rishabdev. हमें जो है भगवान ऋषभदेव के आदेश का पालन करना चाहिए। Tapo divyam. तपो दिव्यम, spiritual or divine type of tapasya. आध्यात्मिक या दिव्य तपस्या में उठानी चाहिए। Then what happens? Tapo divyam putraka yena sarvam shudyat. Then the heart becomes purified. तो दिव्य तपस्या या आध्यात्मिक विषय के तपस्या करने से क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध ये। And then you have a result at the end, Brahmā saukyam tvanantam, unending spiritual happiness. और उसका परिणाम जो होता है वह है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख, अनंत आध्यात्मिक आनंद। So yes, we all want to get something for what we are doing. निश्चित रूप से हम कोई भी यदि परिश्रम करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं। Not really anything wrong with it.
और इसमें कोई ज्यादा गलत भी नहीं है, निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति कुछ श्रम करेगा तो बदले में कुछ परिणाम चाहते हैं। Yes, if we perform tapasya, sacrifice and inconvenience to get something, it should at least be divine or spiritual. तो इसी प्रकार से यदि हम तपस्या भी करते हैं कुछ पाने के लिए, मान लीजिए आध्यात्मिक, तो हमें करना चाहिए आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए। So, and Srila Prabhupada, of course, just tells us that for us, the tapasya is basically four regulative principles. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोगों के लिए तो तपस्या क्या है, बेसिकली 4 नियमों का पालन करना। If we can do that, then we have already covered a great majority of what is expected from us as tapasya. और यदि हम 4 नियमों को सफलता से पालन कर रहे हैं, तो जो तपस्या हमसे अपेक्षित है, उसका अधिकांश भाग तो हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। And then getting up early and chanting, of course, and all this other activities in devotional service, they shouldn't be all just felt like it's all tapasya. और जल्दी उठ करके और जप करना और अन्य सब भक्ति साधना भक्ति विधियों में लगना, ये सब हमारी तपस्या है। Actually, when the heart becomes purified and when it makes advancement, what others may feel is very inconvenient, it becomes very convenient for the devotee. तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तो जो भक्त करता है बाकी लोगों को देखिए लग सकती है, लेकिन भक्त को नहीं लगता है। Even these 4 things we shouldn't do. Materialistic person, sometimes they think it's impossible. तो ये जो 4 नियम हम पालन करते हैं, जो भौतिकतावादी लोग, उन्हें लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल असंभव कार्य है। But with a little bit of practice, and when one, as I said, become purified, then you wouldn't, even if you will be paid for it, you will not give up these 4 things that are apparently so difficult. तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है और थोड़ा सा अभ्यास के बाद में व्यक्ति जब अभ्यास करता है और हृदय शुद्ध होता है, तो उसके बाद अगर किसी को कीमत भी दी जाए, कुछ अच्छा मूल्य भी दिया जाए, तब भी वो 4 चीजों में लिप्त नहीं होगा, इन 4 नियमों को नहीं तोड़ेगा। If I offer you 200 rupees, if you drink whiskey, will you do it? 1,000 rupees? Translate. तुम्हारा पूछ रहे हैं कि यदि आपको 200 रुपए दिया जाए, तो क्या आप 1 गिलास विस्की पिएंगे? नहीं। और अगर 1000 रुपए दिया जाए? 10,000. 10,000। आप कितने लोग तैयार हैं पीने के लिए? She still says no. What about a lakh of rupees? अगर 1 लाख रुपया दिया जाए? Now we begin to think, maybe, it's tapasya to drink. I have a lakh and then I give it to Krishna. तो कितने लोग सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे तो हम 1 गिलास पी लेंगे? No. नहीं विस्की तो जो है, और कोई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं शायद 1 लाख रुपए मिलेंगे तो हम ये तपस्या करते हैं, भगवान को 1 लाख रुपए। Well, maybe whiskey is not so difficult. Let's make it a little more difficult. You have to kill and eat a cow. मान लीजिए अगर आपको एक गाय को मार करके खाना हो, well, even a lakh or a crore of rupees. 1 करोड़ रुपए मिले तभी भी शायद कोई ये ना करे। No, actually, no. Anyway, so watch just a little exercise. So, yeah, tapasya is actually very beneficial. तो तपस्या जो है ये बहुत ही लाभकारी विधि है। If you have the right angle of vision and you understand it and you practice it and you see the result, it's like, following the doctor's advice, you see you become more healthy and everything, so there's no problem. यदि हमारा सही दृष्टिकोण हो, सही रवैया हो, सही विधि का पालन कर रहे हो और सही नतीजा हमको प्राप्त हो रहा हो, तो तपस्या बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से जैसे आप किसी डॉक्टर के द्वारा, एक वैद्य के द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। As it was said in one of the verses, it's the wealth of the renounced Lord, right? तो एक श्लोक में बताया कि जो तपस्या है यह विरक्त जीवन के खजाना है, निधि है। So wealth is like a treasure; it's very valuable. जो धन होता है, जो खजाना, एक खजाना होता है बेसिकली, उसको लोग बचा के रखते हैं। It's not something that I have to do it, and although it's so difficult, but still I have to do it, otherwise I go to hell. तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सोचता है कि अरे तपस्या नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ये वो नहीं, वो स्वाभाविक रूप से करते हैं। No, it becomes very positive, something that helps us. ये एक बहुत ही सकारात्मक रवैया बन जाता है तपस्या के प्रति कि नहीं ये मेरे लाभ के लिए है। And we don't want to give it up, actually. और हम फिर तपस्या को छोड़ना नहीं चाहते हैं। So we can take this
तपस्या का जो लेसन है, शिक्षा है, वह ले सकते हैं। And we can see how the Lord appreciated Brahma's attitude and his willingness to do it, and he said, I'm very pleased with that. और हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न है उनकी तपस्या को देख करके। So, any doubts about this? आप में से किसी कोई प्रश्न हो? Okay, let's hear the doubt. हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत अच्छा बताया। मेरा एक क्वेश्चन महाराज जी, कि हम 4 माला भी करते हैं और अच्छी तरह से मतलब जप वगैरह भी करते हैं, उसके बाद भी हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। क्या नियम 16 माला कर रहे हैं तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा? He's asking that we are chanting 16 rounds, following and following 4 articles so nicely, but still we feel that our heart is not getting purified. There has to be a quality also. A quality, it cannot be only mechanical. तो महाराज कह रहे हैं कि केवल एक मैकेनिकल मशीन यांत्रिक रूप से जब करने पर भी इतना परिणाम नहीं होगा, उसके अंदर कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए। I mean, not in, yeah, you can even say quality in following the 4 regulative principles. जब के लिए कह रहे हैं नहीं चाहिए मैकेनिकल। But generally, when we say quality, we refer to the chanting. जब के लिए महाराज कह रहे हैं। Because, for example, there are 10 offenses to be avoided. तो जिस प्रकार जब के अंदर हमें 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। So, if one chants and commits, or maybe all of them, or any, we commit offenses, then the result will be not visible. जब करते समय यदि हम कोई अपराध या सारे अपराध करते हैं तो फिर जब का जो परिणाम है वह हमें उतना ज्यादा नहीं प्रदर्शित होगा, दिखेगा। So in Chaitanya Charitamrita we find therefore the statement that if one is chanting and one doesn't feel any change, that means he's committing offenses. और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि यदि कोई जप कर रहा है लेकिन फिर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं। And then it will depend even on the type of offense and with what intention, then it will be more and more difficult. और ये भी निर्भर करता है कि किस भावना से अपराध किया गया है और किस डिग्री का अपराध किया गया है या गलती किया गया है, तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। If we commit the first one, sudden ninda, even once, if it can be very destructive. What to speak if it happens regularly? तो यदि हम पहला नाम प्राप्त करते हैं जो साधनों की निंदा है, तो हमारे लिए और भी अधिक भक्ति के विधियों का पालन करना मुश्किल हो सकता है। केवल एक बार भी किया गया और अगर कई बार लगातार एक आदत बन जाए तो और भी ज्यादा किया गया। Then, as described by Chaitanya Mahaprabhu, it's like having a mad elephant in your garden. तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि यह एक आपके बगीचे में पागल हाथी के घुसने के समान है। Hathi mata, mad elephant. हाथी मता एक पागल प्रमत्त हाथी के समान है, इस अपराध को बताया गया वैष्णव साधु निंदा का। Now I heard what it means for this mad elephant. These elephants, when they smell some liquid is coming out of some other elephant and they go crazy, then they have to be tamed. You don't know this. You're living in the city, you don't know what elephants. Anyway, that's what I heard. The elephants, there's a certain time when the other elephants, something may come out, I don't know whether it's the ear or something, some secretion. And when they smell it, they become all agitated. तो ऐसा होता है कि पागल हाथी का क्या जो वो है उसके कि कभी-कभी जब ऐसे हाथी दूसरे हाथी के कुछ उनके शरीर से कुछ निकलता पदार्थ देखते हैं और सूंघते हैं, उसको सूंघ करके वे पागल हो जाते हैं। ऐसा कुछ वास्तव में समय आता है। So the caretakers of the elephants, they have to tie them or have some enclosure so they cannot get out. तो जो हाथी को देखरेख करने वाले महावत होते हैं उन्हें आसपास में तो कुछ बाड़ लगानी पड़ती है जिसको हाथी बाहर ना निकल सके, या फिर बहुत ही मजबूत जंजीरों से हाथी को बांधना पड़ता है। Otherwise they become very dangerous. नहीं तो वे बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। They can just go anywhere, they kill people, I mean, very, very dangerous. वे बहुत सारी क्षति कर सकते हैं, दुर्घटना कर सकते हैं, कई लोगों को मार सकते हैं इत्यादि। So the first offense, the Lord compares it, he himself, Chaitanya Mahaprabhu, compares that first offense to this kind of animal.
तो ये जो पहला अपराध है चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको एक पागल हाथी के समान उससे उसकी तुलना करते हैं। So it's the most serious one. So if one commits that, then you can forget it for lifetimes practically to make some advancement. यदि कोई इसको बार-बार करता है इस अपराध को, तो फिर तो कई जीवन काल के लिए वह अपनी भक्ति प्रगति के विषय में जो है भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। But there are 10, so there's 9 more. So if you commit them frequently, then they're very slow progress. ये तो पहला अपराध है, इसके बाद 9 नाम अपराध और भी हैं। यदि हम इनको करते हैं तो हमारी भक्ति आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमारी प्रगति बहुत स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। So one has to avoid them. I have to avoid them. तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक उनसे बचना चाहिए 10 नाम अपराधों से। That's generally the reason. The other one is asatsanga. If you don't feel you're making advancement, then it means you have bad association. और दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि यदि आप भक्ति विधियों का पालन करने के बाद भी भक्ति प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा उसका अब वो है असत्संग। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रवचन के लिए। महाराज मेरा ये प्रश्न है कि जैसे एक संसारिक जो पर्सन है, एक इंसान है जो ऑलरेडी अपनी पिछली कर्मों की वजह से अच्छा सुख भोग रहा है इस संसार में, उसको कहो कि ये इस संसार की सुख छोड़कर तपस्या करो, तो उसके मन में ये भावना आती है कि जो ऑलरेडी सुख मिल रहा है उसको छोड़कर एक काल्पनिक सुख के लिए तपस्या की जाए, तो मतलब ये कहाँ की समझदारी है? He's asking that if a person who is well settled in materialistic material life, then if he is told to do austerities and penance for the happiness which we call as spiritual, but they feel as something imaginary, then the person says that this is not a proper intelligence, that we give up the present happiness, present so-called happiness, to attain an imaginary happiness. Okay. So what do we say? Therefore, there was a booklet in the beginning of the movement called "Who is Crazy?" इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक निबंध लिखा था हमारे आंदोलन के प्रारंभ के अंदर, Who is crazy? Yes, पागल कौन है? because they think we are crazy. तो जो अभक्त लोग हैं वे सोचते हैं कि भक्त लोग पागल हैं, And we think they are crazy. और हम लोग कहते हैं कि जो विषयी लोग हैं वे पागल हैं। Now, we can, at least if we accept Krishna's teachings in Bhagavad Gita, we can prove that we are not crazy. यदि हम भगवद गीता में श्री कृष्ण के आदेश को समझते हैं, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कम से कम हम तो पागल नहीं हैं। And that actually they are crazy, they are even just mood. और हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वे लोग न केवल पागल हैं बल्कि मूढ़ हैं, मूढ़ा। Or V-moodha, big great number 1 moodha. और मूढ़ नहीं, विमूढ़ है, विशेष मूढ़। Yes. एक नंबर मूढ़। एक number. So why? Why do we say that? Why do तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वे लोग विमूढ़ हैं, ये पागल हैं? So Krishna says in Bhagavad Gita that those who are intelligent, they don't take part in the pleasures that are having a beginning and an end. तो कृष्ण गीता में कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वे उन प्रकार के आनंदों में या सुख में भाग नहीं लेते जिनका आदि है और अंत है। And when he speaks about the demigods, for example, he says also whatever phala, fruit they can give, it's anta. It has a beginning and an end, it's temporary, so don't go for that, he tells Arjuna. और अर्जुन को कृष्ण ये भी बताते हैं कि देवताओं के पास भी जो फल प्राप्त होते हैं देवताओं से, उनका भी एक प्रारंभ होता है और अंत होता है, तो देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है क्षणिक सुख के लिए। Yes, whatever happiness you can get in this world, it's not that you cannot get, you can get, but it's just flickering, it comes and goes very quickly. इस संसार के अंदर ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई सुख नहीं है, सुख भी लोगों को मिलता है, लेकिन उस सुख का जो स्वभाव है वह क्या है, वो बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही वो किसी क्षण में आता है और क्षण भर में चले जाता है। Now that everybody actually knows, you cannot deny it, it's a fact. और इस तथ्य की कोई भी आनाकानी नहीं कर सकता कि जो संसार का सुख है ये बहुत ही क्षण भंगुर है।
how many cases we have of people when they do get money or they get a good position or they, whatever they may get, they want to keep it. इतने अनेक उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं, समाज के अंदर देख सकते हैं कि लोगों के पास यदि कोई धन हो जाता है या कोई पद हो जाता है तो वो उसको हमेशा बचाए रखना चाहते हैं. Do we have any example in this world of somebody who was able to keep it indefinitely, forever? क्या लेकिन हमारे पास एक भी ऐसा उदाहरण है कि ऐसे किसी भी चीज को, ऐसे किसी भी संपत्ति को वह अनंत काल तक अपने पास रख पाया है? No. On this planet especially, even to keep it for one whole lifetime is practically impossible. तो अनंत काल की तो बात छोड़िए, इस ग्रह पे तो केवल एक जन्म के लिए भी ऐसी संपत्ति को अपने पास रखना संभव है. The goddess of fortune is called Chanchala. जो भाग्य की देवी है, लक्ष्मी देवी है, उनका एक नाम है चंचला. Yes, Chanchala. She is going. Where is she? तो बहुत चंचल है, वे कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, अर्थात एक व्यक्ति के पास में कभी नहीं रहती. You had it right in front of her, and now, oops, she's gone. Where is she? तो वे कभी व्यक्ति सामने होती है और थोड़ी देर के अंदर ही चली जाती है. So material happiness is exactly like that. तो जो भौतिक सुख है उसी प्रकार है, बिल्कुल चंचल है और नहीं है. Now we become bewildered if it lasts like some hours or some days or even some years. We think, oh, this is fantastic. This is perfection. और यदि कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल हमारे पास में कुछ संपत्ति या कुछ सुख हो तो हमें लगता है, हम मोहित होने लग जाते हैं कि ओह ये तो बहुत अच्छा है, भौतिक जगत में तो बहुत सुख है. And even if some people accept, yes, I know it will not last forever. और हो सकता है कुछ लोग ये भी बोले कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे पास पूरे समय तक नहीं रहेगा. Then the philosophy is, well, enjoy as long as you can. तो फिर सिद्धांत मानता है कि ठीक है, ये तो ठीक है कि हम अनंत का चिरकाल तक या शाश्वत जीवन इसको नहीं भोग सकते, लेकिन जब तक ये तब तक तो भोगो. Isn't it? Yes, that's a fact. So we say this is crazy. तो जो ये सिद्धांत है कि जब तक आपका सुविधा तब तक भोगो, हम लोग कहते हैं कि वह गलत है. You already know it's not going to last. It's just, comes and goes. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये रहेगा तो है नहीं, आएगा और चले जाएगा. Even if the body you have, you may be very proud of it. Some people are. कई लोग अपने शरीर को, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अहंकार होता है उनको. Especially movie actresses or actors, doesn't matter. Especially जो फिल्म नेता, अभिनेता, जो नायक रहते हैं उनको. Your Bollywood heroes. जो बॉलीवुड के नायक हैं. People think if I could just be like that, that's perfection of life. और लोग सोचते हैं कि यदि मैं उनके जैसा बन सकता तो ये जीवन के सर्वपराकाष्ठा है. Generally, you can say they are very beautiful. हम कह सकते हैं कि साधारणतया वे बहुत सुंदर होते हैं. Right? You don't have ugly actresses normally. हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई जो फिल्मी अभिनेत्रियां होती हैं बहुत बदसूरत होती हैं. No, they're all like super demigoddesses. तो वे तो किसी देवियों के समान, अप्सराओं के समान रहते हैं. And they have lots of money. They have also lots of money. और उनके पास बहुत सारा धन भी होता है. But then they become old. लेकिन फिर वे भी वृद्ध होती हैं. Also not just Bollywood, Hollywood actresses also. केवल भारतीय नहीं, जो विदेशी अभिनेत्रियां हैं वे भी वृद्ध होती हैं. Then they get less and less calls for a new movie. नए फिल्मों के लिए कम से उनके जो कॉल्स हैं वे कम होते रहते हैं. And after some time, people don't even remember who they are. और कुछ समय बाद तो लोग उन्हें बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि वे कौन हैं. And then they just die. और वे बाद में मृत्यु को प्राप्त होते हैं. So somebody aspiring for this kind of happiness is just not very intelligent. तो यदि कोई इस प्रकार की सुख की चेष्टा करता है तो वह निश्चित रूप से पागल है. So of course we are proposing something that people would say it's in another world that nobody knows and has never seen and has not come back to tell us about, something like that. हो सकता है तो लोग हमें भी यही बोल सकते हैं कि देखिए जिस सुख की आप बात कर रहे हो हमें उसका तो अनुभव नहीं है, ना हमने अनुभव किया है, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो सुख को भोग करके हमें बताने के लिए आया हो. यह कोई दलील दे सकता है. But actually we just read today, Brahmā, he has seen, he is telling us. लेकिन हमने आज ही पढ़ा है कि नहीं, ब्रह्मा जी उस सुख को देखे हैं और हमको और देवताओं को बता रहे हैं. Well, we may think it's just stories. और फिर आपको ये भी कह सकता है कि नहीं ये तो केवल काल्पनिक कहानियां हैं, कपोल कल्पनाएं हैं.
But we accept that why not? Happiness is there, but material happiness, whatever arrangement you try to make, you will never be able to keep it. लेकिन ये बात हम स्वीकार करते हैं कि ये शास्त्र है और दूसरा कि भौतिक जो सुख है ये हम कितना ही प्रयास करें लेकिन हमारे पास रह नहीं सकता है. So then sometimes Srila Prabhupada, he gives a very, you can say, reasonable argument. तो श्रील प्रभुपाद का बहुत एक अच्छा इस पर तर्क प्रस्तुत करते हैं. He said, so many lives we have tried for this material happiness. इतने सारे जीवन में हमने जन्मों के अंदर हमने जो है भौतिक सुख के लिए परिश्रम किया है. Now, this one life, just try something else and see what happens. क्यों नहीं केवल इस जन्म के अंदर कुछ नया प्रयोग किया जाए और उस सुख की तलाश की जाए. So actually it's a 50-50 chance. तो कम मतलब 50% चांस है कि हम सफल होंगे या असफल होंगे. 50-50 चांस. We may be wrong. हो सकता है मान लीजिए आध्यात्मिक जीवन को प्रयास करने में हम गलत हो मान लें. Okay, but if we are right, then what? लेकिन अगर मान लीजिए हम सही हैं तब क्या? And those who rejected, they have no chance. लेकिन जिन्होंने साधन जन्म का प्रयास ही नहीं किया है उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है. So we have at least 50% chance. भक्तों के पास कम से 50% का अवसर है, चांस है. Maybe it's right. हो सकता है कि ठीक है. Now another thing is, of course, that is very difficult to explain, but those who practice even in this lifetime, they will already experience spiritual happiness. हाँ, एक और बात है कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते हैं उनको तो आनंद की प्राप्ति से जीवन में होने लगती है, लेकिन इसको दूसरों को समझा पाना बहुत मुश्किल है. Now Krishna says that, and he confirms it. Susukam kartum avyayam. He says this process is joyfully performed. कृष्ण गीता के अंदर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम कि यह जो विधि है, जो प्रयास है, आध्यात्मिक जीवन है, ये बहुत ही आनंद के साथ इसको पालन किया जाता है. So it's not that we are miserable in this life and we have to wait for some heaven in the future. तो ऐसा भी नहीं है कि हमें इस संसार इस जीवन में बहुत दुखी रहना पड़ेगा और बाद में जो है इसके बाद में हमें सुख प्राप्त होगा. Even Prabhupada said it very clearly. This temple is not Delhi; it's Vaikuntha. तो इस जन्म में भी आनंद हो सकते हैं और प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला कि यह जो मंदिर है यह दिल्ली में नहीं है, यह वैकुंठ जगत में है. And the atmosphere that those create who are practicing bhakti, you can perceive it. और जो लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं उनके द्वारा जो वातावरण बनाया गया है उसको आप परसीव कर सकते हैं, उसको आप अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. And some people who are a little more sensitive, even if they're not devotees, when they come in contact with the spiritual atmosphere, they can appreciate it. तो ऐसे लोग भी जो भक्त नहीं हैं लेकिन थोड़े बहुत संवेदनशील हैं, तो वे लोग जब ऐसे वातावरण के प्रभाव में आते हैं, ऐसे वैकुंठ वातावरण के मंदिर के वातावरण में आते हैं, तो वे इसका अनुभव कर पाते हैं. And even they can appreciate the devotees, you can say, advancement. They can see that. और ऐसे लोग जो हैं भक्तों की प्रगति को भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. They can see there's some difference. You're different from other people I know. और वे इतना समझ पाते हैं कि ये जो भक्त हैं दूसरे लोगों से अलग हैं. And sometimes they even say, I want to be like you. और कभी-कभी तो वे भी कहते हैं कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं. Anyway, so it's practical. तो ये बहुत ही व्यावहारिक है. Okay, I think we are quite over time, isn't it? Oh, the ladies didn't have a chance. We have to keep. Okay, एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है. Okay. वैसे ही बोलिए. Microphone is coming. Just coming. Wait for the microphone. Prabhuji, thank you for such a wonderful lecture. My question is, you said tapa means willingly accept the sufferings, but if those sufferings becomes the impediment to our further progress, how to deal with it? You want to translate? Yeah. Okay, you say it. माता जी का प्रश्न है कि महाराज ने बताया कि तपस्या मतलब जो है स्वेच्छा से तकलीफों को सहन करना, लेकिन कभी-कभी ऐसी तकलीफें जो हमारे मार्ग में आती हैं भक्ति को अनुकूल करने में ही बाधा बन जाती है, तो फिर हम उसको कैसे समझें और कैसे उस पे एक्ट करें? Well, if the type of tapasya we are supposed to perform is given by
our guru, the acharya, how can it be an impediment? तो यदि वह तपस्या जो हम पालन कर रहे हैं वे हमारे गुरु और साधुओं द्वारा दी गई है, तो वह कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा हो सकती है? It's about the people around us and the circumstances around us that are being an impediment to our, to follow that what we. I don't understand the question. आस-पास में जो लोग हैं और उनकी वजह से जैसे गुरु ने हमें जो बोला. Okay, she's saying that we have got instruction from our spiritual master, but we are getting obstacle while following the instruction from the people around us. From our peers. So what can you do? They said willingly accepting that suffering. So do we have to accept all those sufferings that we are going through, being subjected to that criticism? Yeah. Being subjected. That's part of the tapasya. तो माता जी का प्रश्न है कि जब हम ऐसे आध्यात्मिक अनुकूल करते हैं और तकलीफ सहन करते हैं तो लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं, तो महाराज कह रहे हैं वो तपस्या का प्रारंभ है. Yes, it's a तपस्या का भाग है. No, Prabhupada said, don't expect smooth and easy going. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप ये मत सोचिए कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये बहुत ही सरल होगा, आसान होगा. And I think it was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati who said that the path of bhakti is like with thorns, right? But not just rose petals. There's a lot of thorns. तो भक्ति सरस्वती ने कहा कि भक्ति का मार्ग कोई क्या बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस जैसा गुलाब का मार्ग नहीं होगा, उसमें बहुत सारे कांटे हैं. Or, well, Prabhupada definitely said many times that, if you are becoming a devotee and you try to execute devotional service and spread it, there will be so many obstacles and enemies to try to stop you. तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बारी कहा कि यदि आप भक्ति में गंभीर होने का, दृढ़ प्रतिज्ञ होने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत सारे तकलीफें आएंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी जो आपकी परीक्षा लेगी आपकी भक्ति के अंदर. You may be attacked. आपको जो है आपके ऊपर शारीरिक क्षति हो सकती है, कर्ज किया जा सकती है. Nityananda Prabhu was attacked. नित्यानंद प्रभु को जिस प्रकार जगाई बधाई. And then Prabhupada says, yes, Jesus Christ, he was crucified, they killed him. जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे चढ़ा दिया गया और हत्या कर दी गई. So, तो जब उनके साथ हो सकता है तो what to do? हम क्या कर सकते हैं? We still have to continue. लेकिन फिर भी हमें जो है दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रयास करना चाहिए. And actually devotees have undergone quite severe tests, like in Soviet Union, in the Middle East countries, like Lebanon, some were preaching, ended up in jail. और भक्तों ने तो कई जगह पे बहुत सारी यातनाओं को सहन किया है, विशेषकर जो पहले जो सोवियत यूनियन था और अन्य ऐसे यूरोपीय देशों के अंदर जहाँ पे उनको जेल में डाल दिया गया और प्रताड़ित किया गया भक्तों को, क्योंकि उनका एक ही कसूर था कि भक्ति करते थे. Preaching in a Muslim country is like you risk your life. मुस्लिम देशों के अंदर प्रचार करना मतलब अपने जीवन के साथ जो है जीवन में घटना दुर्घटनाओं का आमंत्रित करना. It's prohibited. वहाँ पे तो प्रचार करना जो है बैंड है, उसमें प्रतिबंध है. Anyway, thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. आप सबका बहुत धन्यवाद. और विशेष we want to thank Gauravani Swami महाराज. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. Since request Maharaj, please bless us with the